अस्सलाम वालेकुम, मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। यूँ तो शहर मैसूर में कौम के कई कॉलेजेस हैं और इस कौम में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान और लड़के और लड़कियों ने पिछले कई सालों से अपने वालिदैन की जो ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे आगे चलकर उनका नाम रोशन करें, न सिर्फ उनका बल्कि सारे मुल्क में नाम रोशन करें। इसी तरह शहर मैसूर के अल्हम्दुलिल्लाह कई इदारों में तलबा अपनी जानिब से बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं और हर एक में एक जस्तजू है आगे बढ़ने की। आज मैं अभी MES फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में आया हुआ हूँ। यहाँ पे जो तलबा कामयाब हुए हैं उनके लिए खुसूसी तहनीती इजलास मुनक़िद हुआ है। मेरे पीछे जो मौजूद हैं वो तमाम यहाँ इस कॉलेज के टॉपर्स हैं और इनके अलावा मैं बता दूं कि दीगर कई बच्चों ने यहाँ की इस कॉलेज में मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या दीगर शुबे हों, तमाम ने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए अपना इस कॉलेज का और वालिदैन का नाम रोशन किया है। मैं इन टॉपर्स में से बात करने वाला हूँ ताकि इस न्यूज़ को आप ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करना भूलें और हर वो स्टूडेंट तक इस न्यूज़ को पहुँचाएँ जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। आपका नाम बताओ। हामिद फरहान। हामिद फरहान। आपके वालिद? मोहम्मद अयूब। जी, कहाँ रहते हैं आप? यहाँ मैसूर राजेनगर में। अच्छा, आज टॉपर्स में आपको अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला है, बताइए क्या कहना चाहिए आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कि हमें इस हैसियत के नहीं थे, फिर भी अल्लाह ताला हमने नवाजा इस चीज़ पे। जी हाँ, एक तो सबसे पहले अल्लाह का तो शुक्र है और दूसरा जितना अल्लाह हमें मेहनत तो नहीं करे थे उतना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत तो करे थे लेकिन अल्लाह मेहनत से ज़्यादा दिया। ये सब क्या तो सिर्फ और सिर्फ हमारे टीचर्स की हार्ड वर्किंग की वजह से, उनका एक्सप्लेनेशन कराना, उनका बातचीत में समझाना कि सब कॉलेजेस में अलग अलग रहता है लेकिन हमारी कॉलेजेस में जैसा केयर जैसा फैमिली में होता है ऐसा केयर ले कि हमें क्लासेस को नहीं आ तो हम ना पूछना क्या वास्ते क्लासेस को नहीं आ रही और बाई चांस एक क्लास बंक करा ले, फॉर एग्जांपल हमें बंक करा ले तो उन्हें खुद आको हम ना क्या करते हैं, आको एक्सप्लेन कराते हैं और एक बार समझ। तो इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर्स भी है और फिर डिग्री भी ग्रेजुएट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आपके वालिद? हमारे अब्बा ऑटोमेटिक एक्सेल में एम्प्लॉयर हैं। जी, आप क्या लिए थे यहाँ पे कॉलेज में? मैं BCom लिया था जी। अब होगा फाइनल ईयर डिग्री, अब एक मंथ में एग्ज़ाम से इंशाल्लाह दुआ। अच्छा, आने वाले दिनों में क्या बनना चाह रहे हैं? आने वाले में प्लान तो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करेंगे बोल को है इंशाल्लाह। जी, देखेंगे, अल्लाह मालिक है, उसके बाद देखेंगे। अच्छा, पूरा तो प्लान है। हमारी कौम के नौजवान, अक्सर आपकी उम्र के नौजवान, जो आप उनके अंदर सलाहियत है लेकिन अपना वक्त होटल्स और इसमें वो गुजार रहे हैं, ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप, खुसूसन यूथ्स को? हाँ, इसके लिए तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि एक तो पहली बात है कि तरबियत का बड़ा मसला है। जी हाँ, कि तरबियत अच्छी रही तो काम भी कैसा भी गुजार लेती। कि सब चीज़ क्या है कि आदमी दुनिया बदलना तो पहले ख़ुद को बदलना, अगर से ख़ुद को बदल जाए तो नहीं आगे जाकर दुनिया भी बदलता है। अगर ख़ुद को नहीं बदला तो पूरी ज़िंदगी भी दुनिया को नहीं बदल सकता। तो इसमें सबसे बड़ा मैसेज क्या तो अम्मी अब्बा हो जाता है। अम्मी अब्बा तरबियत तो कर को रहती है लेकिन निगरानी असल है कि उन्हें जाकर निगरानी करना कि कहाँ जा रही क्या कर रही, तो इसके बारे में उनके ऊपर फोकस करे, कीन इंटरेस्ट करे तो हमें भी क्या भी हमारे खुद ही से आगे नहीं, एक तो अल्लाह था, दूसरा हमारे अम्मी अब्बा हमने इंटरेस्ट दिए, कहाँ जा रही क्या जा रही हमारी जिम्मेदारी लिए, तो इसकी वजह से आज हमें भी कुछ ना कुछ बने अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था कि हर फील्ड में लड़कियां लड़कों से ज़्यादा सामने जा रहे हैं, तो ये लड़कों की जो गफलत है वो चाहे कि होटलों में गुजार रहे हैं, तो आप माँ बाप को बिल्कुल कह रहे हैं कि निगरानी करें, लेकिन आप उन नौजवानों को बताएं कि वक्त का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? वक्त का सही इस्तेमाल क्या, अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो मुसलमान है जी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमने सब चीज़ देखो है कि नमाज दिया है, कुरान दिया है कि कैसा ये वक्त अल्लाह के करीब होने का गुजार लेते हैं। एक चीज़ माने क्या चीज़ मालूम होते बोले तो जो चीज़ अल्लाह खुद फरमाता है क्या, जिसका मफ़हूम कि करने के काम करे तो अल्लाह ताला नहीं करने के कामों से बचाता है। तो हमें करने के काम छोड़ डालें तो नहीं करने के कामों में अल्लाह लगा डाले हमें। तो करने के काम तो बहुत सारे हैं, नमाज है, कुरान है, साथ में कॉलेज है। हमारे जहन में क्या हो तो कॉलेज पढ़ना अलग, दीन अलग है, दुनिया अलग है, ऐसा नहीं कि दीन भी दुनिया दो भी मिलकर है कि दुनिया के जितने भी काम है ये दीन के तौर पर करेंगे तो ये भी दीन हो जाता है, कॉमन बात है। और दूसरा तो कि एक तो अल्लाह का ने हिदायत भी मांगना और दूसरा उन्हें खुद फिक्र करना कि भाई कहाँ जाना, आगे जाकर हमें कुछ ना कुछ करना है और हमारी तो ज़िंदगी अमानत अल्लाह ताला देखो ही, कल हमें जवाब भी देना है इस चीज़ का। शुक्रिया। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा कुबरा। आपके वालिद का नाम? सैयद ज़करिया। क्या करती हूँ ना? वॉल्कनाइजिंग वर्क। अच्छा, आज आप टॉपर हैं, सबसे पहले आपको मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, क्या करेंगे तो बात करना ना। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ कॉलेज में ग्रेजुएट बन गए। जी, सोचे नहीं थे इतना जल्दी बन भी जाती मुल्क को, जी, मगर फिर भी बन गए।
हमारे आने वाले दिनों में क्या करना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह जॉब करेंगे बोल को। जी। अच्छा, इस कॉलेज में टीचर्स वगैरह आपको कैसा पढ़ाए, क्या करें? और हम लोग बहुत बहुत अच्छा पढ़े। क्लासेस अगर हमें क्लासेस छोड़ डालते तो भी नेक्स्ट क्लास को आपको बोलते तो भी फिर समझाते थे हम ना। अच्छा, एक बार भी ऐसा नहीं बोले कि नहीं समझाते बोल को, समझे हम ना। तो सब जने बोलते थे कि स्टडीज़ अच्छे नहीं बोल को MES के, मगर सबसे बेहतर यहाँ के 600 MES के स्टडीज़ देखे तो हर चीज़ पढ़ाती, हर चीज़ बोल को देती, क्या भी कॉम्प्रो नहीं करते, हर चीज़ में कॉम्प्रो फ्यूचर करते। प्लान्स क्या हैं? जॉब करना बोल। जी। नहीं, इल्म हासिल करने में क्या है? बीकॉम करें आप? जी, उसके बाद कुछ पढ़ना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह MCOM करेंगे बोल को। शुक्रिया। वालेकुम आपका सलाम। नाम बताओ। सैयदा हानी। हाँ, क्या आज टॉपर हैं आप, क्या कहना चाहिए, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। मैसेज है आपका? सब पेरेंट्स का एफर्ट्स, पेरेंट्स बोल को दें कि ऐसे जाना ऐसा करना, सब पेरेंट्स के एफर्ट्स। और लेक्चर्स तो बहुत यहाँ के, बहुत फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है, इनकी इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छी है। मैं फर्स्ट दूसरी कॉलेज को जमी थी, बाद और मेरे फ्रेंड्स यहाँ जमी करके मैं यहाँ को जमी। सो बिकॉज फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे थे, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो टीचर्स हमेशा साथ में रहते, क्या भी ये नहीं करते कि नहीं बोल को देते, नहीं करते, सब करते, हर चीज़ को सपोर्ट करती हैं टीचर्स भी, लेको लेक्चर हर चीज़, प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। व्हाट इज़ योर फ्यूचर ड्रीम? मेरा, मैं अब MBA करना नेक्स्ट करना चाहती हूँ इंशाल्लाह। बेटा तुम्हें इधर आओ। नाम आपका? मेरा नाम शेख हुसैन है। जी। वालिद का नाम? वालिद का नाम मुजम्मिल है। क्या मैं करती हो ना? फ़िलहाल नहीं इंतकाल है उनका। अब वालिदा वालिदा ही, हाँ वालिदा पढ़ा रही। तो उनके जो अरमान हैं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज आप टॉपर बनकर रहे, कहीं ना कहीं उनको खुशी तो मिली जी, है। पूरे ख़ानदान को खुशी है इस बात की। और मैं राजीव नगर में रहता हूँ, यहीं का हूँ। जी। और जो बात हमारी कॉलेज का कहना है कि हमारे कॉलेज में एक तो पहली बात कौम की कॉलेज है, सेक्युलर कॉलेज वैसा नहीं, बाहर वाले भी आगे पढ़ रही नहीं कर को नहीं, लेकिन ख़ास तौर पर कौम के बच्चों के वास्ते बहुत मददगार है। अल्लाह और कोर्स मिल जाए तो और अच्छा है कौम के बच्चों के लिए। और टीचर्स का जो है बहुत बहुत साथ देती हम ना टीचर्स हमारे, कुछ भी रहो साथ में। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा दले, आए नहीं आए ऐसा इग्नोर करना नहीं आए तो उनको पूछ के खुद जुल्म से बिठा कर पढ़ाती, रिविजन्स तक कराती हैं। अक्सर कैसे बाहर के कॉलेजों में नहीं है, जो क्लास अटेंड करे तुम्हें उसके बाद आओ पढ़ो, उतना केयर नहीं लेते, नहीं पढ़े तो खुद। और इंटरनल्स भी होता है उनको कराए तक ये नहीं करते। और ख़ास तौर पर दीनी एतबार से बहुत अच्छी है कॉलेज हमारी। और मैं चाहता हूँ कि और फ्यूचर में क्या बनना चाहिए? फ्यूचर में इंशाल्लाह CA करना करता हूँ। थैंक यू। The silent floss of water is witness of your softness. The rise of the sun in the east and the sunset in the west is the witness of your rhythm. The rhythmical movement of the moon is witness of your perfection. My words, my soul, is the witness of oneness of glory Allah, whose glorification cannot be described in words. A very warm morning to one and all present here. Myself Shifa, and I would like to welcome you all with my co-anchor Tasmia for this annual and farewell ceremony, which is full of mingled feelings of happiness and sadness. We are happy as our final year students are taking a very important exam of their lives. Sad, but I believe it is not a big end. It is just the beginning of your new journey. We wish you all the best for the future. Welcome you all for this annual and farewell ceremony with my co-anchor Shifa. I would like to invite our chief guest, principal, teacher, and my dear friends. Let's start the program with the glory of Allah. It is the mark of undying tradition to invoke the Almighty at the beginning of an important event, like the great philosophers Soren Kierkegaard once said, "The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays." I would like to call Hamid for Kirat recitation. या खुदा आबरू रख मेरी तू, तेरी हमदो सना कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। To the
management as well as the Honorable Secretary considering me for the post of in charge principal. Giving me such a big responsibility is like trusting me, considering me for this post as an in charge principal. Again, in words I cannot express the gratitude for the management as well as to the Honorable Secretary. The reason behind the growth of our MES institution. MES institution is an institution which work for a cause. Okay, so MES institution is the only institution in Mysuru which work for a cause, unlike other institutions which are working for a profit motive. Our institution, the main cause of our institution is to provide education to all the section of the society at large, mainly focusing on the providing education to the weaker section of the society. We are blessed to have such a executive members, secretary who always constantly support our institutions, support our faculty members, support our students to pursue their education dreams and fulfill their dreams. In the present scenario, every day we come across, because education is one of the most important aspects. Nowadays it has become common in the social media and all, everyone knows that one. If you don't have education, you will not be considered as a valuable. To become a valuable, to become a successful, education is one of the most important aspect. This thing only knows the MES institution and the management and the secretary who always contribute for the growth and development of the whole MES institution. Not only our college, whole institution. It may be the high school, it may be the ITI. So they constantly working together for the growth of the institution, for the growth of the community and for the upliftment of the weaker section of the society. Not only guiding the students, to be precise, you should be knowing, you should be aware of that one. Every year, management, secretary, everyone will be contributing financially as well as the non-financially. Okay? From the last years, so many years, President has been contributing so much financial assistance to the students. In this academic year, our member Arif Mekri sir has contributed so many fees of the students for more than 30 students. So I request to students to great cause of hands. Okay? So it is just a gratitude we cannot express. Professor Afroz Ahmed Sahab, our Honorable Treasurer Mohiddin Pasha Sahab, Mr. Fayaz Ahmed Sahab, Principal Muhammad Irfan Sahab, teaching faculty and dear students. Well, as usual, this has been a memorable day for all of you that you have decided to celebrate the Union Day 2022. And at the same time, it's a time of farewell for all the students who have passed out from this college. Well, as everyone knows, MES has been one of the oldest institutions of Mysuru. I'm extremely happy to be associated with this institution for more than one reason, that my father was also a member for over 30 to 40 years. So similarly, Allah has blessed me with an opportunity to serve the community and the society at large through this institution. We are all very proud that MES is the only Muslim institution pursuing first grade college. This is one of the very important factors, and as I was told, it's over 25 years that we have elapsed that this college came into existence, and maybe all of you were not even born. So this is a very big challenge, that the students get into the primary, secondary education, they pass out SSLC, they will not be sure of what courses they need to opt in PUC, and finally you all have chosen commerce as your main
course. Well, that's a course with which I am also attached. I'm a practicing auditor and tax consultant for the past 40 years. I belong to D. Banmayas College, one of the greatest and the oldest education institution of Mysuru. Professor Sanaullah Khan, who is our vice president, was my teacher. So this is how the hierarchy works. As Muhammad Irfan just put it across, that he was a student of this college, then went on to become a teaching faculty, and today he's the principal. So that's how you climb up the ladders. Very similarly, I give you another example, that Professor Shakibur Rahman, who is the president of this institution, was a student of SJC, J. Chamarajendra College of Engineering, and went on to become the principal of that institution. So these are, very fond memories that we carry. And the question that stands before the students who have passed out in the final year is what you do next. This is very, very important, because since I belong to this background, I would like to share a few things which may help you over a period of time. Firstly, once you pass out, you will be desperate to get into a job. This you should avoid. I know for various reasons, the background of the family, the socio-economic condition of the family provoke you to get into a small-time job. So that stalls the progress. According to me, from here onwards, the final year students who have passed out should, start pursuing another course, which could be masters, which could be MBA, it can be MCOM. Then also you have some wonderful courses like chartered accountancy, cost accountancy, and so on. So these are very competitive courses which you need to pursue, and that will take you to the next level. As our principal was just now sharing, that most of them have gone into very good jobs. Alhamdulillah, that's a very nice beginning that you can always cherish to, be a graduate. So how many graduates that we can produce in a year is important. I'm talking of the kind of competition that today we have in our community, in the whole society. Firstly, you have to be a good Indian, be a true Muslim, and then be a big asset to the society. उनके आप तमाम मिलकर जो next generation है, this is a very, very important generation, because I think most of them will become first time voters. You all will become first time voters, and you have to choose the right candidate. You know what is kind of polarization that we are going through in this country. So all these things, you have to be much updated, very much updated.